Hi, my dear beautiful viewers. How are you all doing? I hope you all are doing fine and in the best of your health. If anyone has seen my video from yesterday, I'm really sorry because yesterday I was really shattered inside. It was painful for me to see whatever is happening around the globe at this point of time. Uh, when you truly vibe in the divine energy of compassion, empathy, that's when you as a divine being, you tend to suffer those kind of conflict inside your brain, inside your mind, right? uh, I will be doing this video in Hindi and English today, and I really do apologize because my Hindi is not too good, but I would definitely like to do Hindi videos as well. To be honest, I am not good in any language, precisely. But yeah, I mean, this is who I am, my true authentic form of who I am, okay? And please accept me the way I am. And I definitely have created this channel to bring some divine messages for you, wherein you understand life to its core, to truly its core. Only if you understand that, that's when you can expect your life, uh, you know, to be the way you want it to be. Because we as a human being, half of the time we don't truly know what we want in life, right? हमें खुद नहीं पता होता है कि हमें एक्चुअली में ज़िंदगी से चाहिए क्या, और हम भागते रहते right? There comes a time when we really choose a point when to stop. कहाँ रुकना है ये हमें पता होना होगा, right? We will have to know when to stop and where to stop. And if you have no idea like how to stop, then there is something called inside, where you get those nudges which tells you, you need to listen to this. That's when your intuition, your psychic abilities, your ability to see the things the way it is, that's when you will be able to. And yes, it is not that easy, because when we vibe in this 3D world, what we see, we feel that that's what real, right? But honestly speaking, don't caught up there. वहाँ पे फंस के कभी मत रहना, because that is not true. That is truly not real, okay? That is just an illusion, a maya. It's not necessary that whatever the other person is doing is right. Neither you can say that person is right or wrong, because who can judge what is right and what is wrong, right? But we as a human being, we have that reasoning brain, right? That reasoning power to understand what is right and what is wrong, what is ethical and what is unethical. क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, right? So we need to vibe in that energy of being that Lord Krishna, right? In yourself, you have to see the divine light within you. Why I said Krishna? Because Krishna was very practical, right? He was practical, He was the one who was there when Mahabharata happened, right? तो अगर कृष्णा के होने के बावजूद महाभारत हो सकता है, why the Mahabharata happened? Mahabharata happened because of अधर्मा. कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि आपको भगवान समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चे उस रास्ते मत जाओ, but you will keep going that route only. At the end, boom, right? Your life is completely almost shattered by the time you came into this self-realization that, oh, I did something wrong, right? That's why I always talk about ethics, morals, principle, values of life. I'm not talking about that traditional belief system, okay? It's not about those traditional belief system. It's all about your true authentic self of who you are in your divine form, right?
Where do you stand? You need to be practical in life at times and make those right decisions. Take those right choices. And when you take those right choices, as per when you go through your heart, when you follow your heart, you listen to your heart and soul, not like typically caught up in that stupid mind of ours, right? When we try to see that, that's when we will be able to vibe in that energy where you are becoming an Arjun of your own, to understand those nudges from the universe and implement that in your day-to-day life. And at the same time, you will have a divine power within you like Krishna, who will guide you and navigate you in your journey, like Arjun always had Krishna with him, right? Now look around the globe, whatever is happening. We don't have to really now think about whether Mahabharata ever happened or not. But this is where we are right now, that it is Mahabharata. It is truly Mahabharata. You know, a fight of righteousness, a fight of setting up dharma is happening around the globe. And that's why when somebody speaks truth, bulldozer runs over that person's house, right? Her life is in danger, right? But when you keep standing there, you know, with your power, divine is always there. If Kangana Ranawat is the Arjun right now, then Krishna is with her. Period. No more discussion on that. Right? And we all will see. Our voice counts, guys. She is nobody to me, to be honest. You know. And honestly speaking, I like only 3 movies of her so far. And that is Gangstar, when she first was launched. You know, and then her Queen movie, and then the other one was Fashion. Okay, so these are the movies that I have seen, and you know, I have not even seen Manikarnika, for which she became so famous and all. But this is a self-made woman, right? We as a woman, we as a human being, it's not a fight about man and woman. It's about ethics and unethics, dharma and adharma. राइट ये महाभारत उसी का ही है, और हमें अपना आवाज बुलंद करना होगा, राइट? खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है. You have to come in that power when God will come down and ask you, tell me, what do you want? I'm here to give it out to you. But in order to be that much of a powerful being, to, you know, come up to God and say, look, this is what I deserve. Give it to me. Trust me, my dear beautiful people. He is always there. He is always there with us. उन्हें ढूंढो मत, केवल पहचानो, you know. Whenever I go through that mental trauma and pain of seeing these things around the globe right now, you know, I always say that, yeah, this is happening for a bigger cause, because we are going through some, you know, quantum upgrade. You know, these are events which are going to change the history of mankind. All right, and in this, the role that we are playing is bigger than anybody can think of, right? हमने अपना अस्तित्व खो दिया है, okay? And we will have to stop fixing others' life. We will have to stop, you know, thinking about this and that and other, right? It's time to go within, look within, and find our true authentic self from within. Not what other peoples will say, not what other peoples will do. No fear, no insecurity, no grudges, no hatred, no bickering, nothing, no gossiping. Once you vibe in that divine power of yours, that's when miracle will happen in your life. If not, then trust me, my dear beautiful people, my videos are not to scare anybody, but my videos are always about enlightening you all. Because we will have to come out of our deep slumber. We will have to awaken to our higher consciousness, okay?
which is Krishna consciousness, which is Ram consciousness, which is Jesus consciousness, right? Which is Prophet Muhammad consciousness, right? Until and unless we tap into that energy of ours, our life will always be a mess. I have learned life lessons in hard way, to be honest, you know. I really have learned life lessons in a hard way. And that's the reason I always make sure that one person does not go that route. The pain that I have endured, I don't want for others to go through the same pain. And that's why I keep making this kind of videos where I try to bring the truth in front of you, how God talks. If you see my past videos, I always talk about how God talks to you, how to understand the signs and synchronicities of God. भगवान इशारे में बातें करते हैं और आप उन इशारों को क्या समझते हो? You know, is the question. And I try to bring these messages, these informations, this knowledge and wisdom to you so that you can also, you know, stay with God the way I stay with God today. Trust me, I ask for one thing, that this is what I need. And it's there, like a miracle. When you believe in miracle, miracle happens. But if you keep believing, or whatever has happened in the past, it will continue again, history will rewrite and things will come back again. No. Who says? जो कल हुआ आज भी वही होगा, कोई जरूरी तो नहीं है ना. It's all how we see, right? What we see, that's what we tend to believe, and that's what we keep thinking, and what we think, at the end, what we think in our perception we create, and that's what we project out to the outside world. Then, because we are doing everything as per others' convenience, right? उसे क्या अच्छा लगेगा, उसे क्या अच्छा लगेगा, you know. It's like this, you see. There you go. You don't need this different kind of entities. ये सब होता है इशारा. Everything is written in divine timing. You need to believe in that process, my dear beautiful viewers. You really, really need to believe in yourself. Believe in that process of the divine. अगर आपसे कुछ हो नहीं रहा है, तो surrender कर दो. Leave it. Tell God, oh, I cannot do anything. Please show me a way. Bango. If you do that, God will come. I'll tell you one thing. God will never come and interfere in your life to help you, okay? To come and help you. I'll tell you why. Because there is something called free will. Alright? God will bring you to that place where God will give you that understanding, that realization that, okay, my child, this is wrong, this is right. ये सही है, ये गलत है. आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये सही है और ये गलत है. Right? When you understand that this is right and this is wrong and what need to be done and what not, उसके बावजूद भी अगर आप वही गलतियां करते रहोगे, then you will be bringing back to this same place. आप घूम घाम करके सिर्फ यही आकर के पहुंचोगे. Until unless you learn from here, you fix that in your life, you see things until from a different perspective. जब तक आप इसको दूसरे नजरिए से देख नहीं लेते, समझ नहीं लेते, अपना नहीं लेते, adopt नहीं कर लेते, तब तक आप वहीं के वहीं रहोगे. Nothing will change. And the matter of the fact is, right now, the timeline that we are in, the planetary alignments that we are in, things are going to be very, very complicated for human being. Because we are so much caught up here that we are not ready to let go of our fear, doubts, insecurities, confusions. We are not ready to kneel down in front of God and surrender that, okay, divine, हाँ भगवान आप ही हो, जो हो, प्लीज कुछ करो. हम नहीं झुकेंगे, you know, हम तो बस लगे रहेंगे. Right? At the end, everything will be mess, you know, chaos, commotion in your life. And what I try to do is stop you there so that you can see your higher power, come into the divine power of yours, take the charge of your life, you know, stand for the truth, speak for the truth, do good, you know, and you will see wonders happening in your life. What goes around comes around, right?
जो बोगे वही तो काटोगे ना आप। तो आप ये सोच करके देखो कि आज कितना अच्छा काम आपने किया। अगर ये वीडियो सुनते हुए अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार कोई है जो कुछ अच्छा बोल रहा है, तो ग्रेट, यू आर अ वंडरफुल सोल। लेकिन अगर कोई मुझे सुन करके इस वक्त बोल रहा है देखना जरा क्या बकवास कर रहे, देन आई एम सॉरी टू से। गीता, कुरान, बाइबल, आई हैव रेड एवरी स्क्रिप्चर्स, ओके। There is no scripture in this world as of now, but I feel that I have not read. And what I have understood about life is that जो भी है उसका है, जो आपने पाया है वो उसने दिया है, और उनका पूरा हक है आपसे वो ले जाने का, राइट। तो आप कौन हो? Who are you? कभी ये पूछा है आप कौन हो? आत्मा हो आप, एक आत्मा, उसका अंश, उस परमात्मा का अंश, राइट। उन्होंने आपके शरीर में डाला है आत्मा को, उस आत्मा की वजह से आपकी पहचान है, राइट। अगर उस आत्मा का ही आप नहीं सुनोगे, then I am sorry to say what it means to come in your knees, on your knees is no fun, no joke. भगवान ऐसे जगह पे ले आता है ना, वो ऐसे ही बात है। जस्ट थिंक, इफ यू आर अ पेरेंट, अगर आपके माँ बच्चे हैं तो आप खुद सोचो, अगर आपके बच्चे को चोट लगता है तो आपको कैसा लगता है। तो सोचो, जब उस परमात्मा का अंश को चोट लगता है तो उस परमात्मा पे क्या बीतती होगी। कभी सोचा है? तो सोचो, जब आत्मा आपको बोल रहा है कि मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे यहाँ जाना है, लेकिन नहीं, आपको तो वही जाना है, तो वो तो आत्मा तो रोके फिर वही बोलेगा ना, देखो भगवान, देखो बाबा, जो भी जिसको भी आप मानते हो, ये तो सुन ही नहीं रहा है मेरे बात, भाई मुझे तो ले जाओ। दैट्स व्हेन यू डाई, राइट। तभी आपकी जिंदगी में ऐसे चीजें होती है कि भाई जाग जा, गेट अप, वेक अप टू योर कॉन्शियसनेस। कर क्या रहे हो? तुमको दिखाई दे रहा है आगे खाइए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वही जाना है। ठोकर लग जाएगी, गिर जाओगे, फिर भी नहीं संभालना है, राइट। सो आपको जिसने जो भी कुछ दिया है, उस परमात्मा ने, उनका पूरा हक है आपसे वो सब कुछ छीन के ले जाने का। अब छीन के ले जाने देते हो कि नहीं देते हो, वो चॉइस आप पे रखा है उन्होंने। दैट्स योर फ्री विल। अगर आप सुनते हो, सही करते हो, तो ठीक है, आपकी जिंदगी सही बनी रहेगी। लेकिन अगर नहीं, तो आई एम सॉरी टू से, बुरा लग रहा है ना सुनने में, ट्रूथ इज बिटर। वही तो बात है, जो सच बोलते हैं जूते मारे जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं, घर तोड़े जाते, बुलडोजर चलाया जाता है, मार दिया जाता है, राइट। एक महाभारत वो था जहां एक धृतराष्ट्र था अंधा, पुत्र मोह में बिल्कुल महाभारत हो गया। वही तो महाराष्ट्र में हो रहा है, पुत्र मोह, राइट। और वहां पे अब जब द्रौपदी खड़ी हुई है, ठीक है ना, धर्म का लड़ाई लड़ने के लिए, तो तुम्हें आंखों में चुभ रहा है, राइट। सो ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर। हु स्पीक्स ट्रूथ, पीपल डू लाइक दिस, विल गिव, बट वेयर देयर इज ट्रूथ देयर इज गॉड, वेयर देयर इज लव एंड कंपैशन देयर इज गॉड। इफ यू डोंट हैव दैट, देन आई एम सॉरी, you only have demon, evil, all those nasty energies around you. What goes around comes around. अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो यही सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में बुलवाओगे, इसी सारी चीज़ों को मंगवाओगे, आएगा आपके तरफ, ठीक है। आप अगर अच्छे हो तो आपके पास अच्छे ही लोग आएंगे, लेकिन अगर आप बुरे हो, who will spend time with this person, लोग यही बोल करके चले जाएंगे, आपके पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन देर सवेर अगर आप सच्चे रहते हो ना, भले अकेले चलना पड़े, लेकिन सच्चाई के राह पे अगर अकेले चलना पड़े ना, तो चलो, घुटने छिल जाए, पाँव में छाले पड़ जाए, लोग साथ छोड़ दे, फिर भी चलते रहो, क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा है और वो आपको देख रहा है। डोंट गिव अप। बट थक जाते हो, हार जाते हो और रास्ता मोड़ लेते हो, देन फिर तो आप दूसरी बार जब यहाँ आके पहुंचोगे ना, जहाँ से आपने शुरू किया था, जहाँ रास्ता बदल लिया था, वहाँ पे और ज़्यादा कुछ खड़ा रहेगा आपके लिए, बिकॉज दिस इज हाउ कर्मा वर्क्स, राइट।
तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि आप कौन हो, उसको देखो, उसके लिए जागो। गेट अवेकन टू योर हायर कॉन्शियसनेस। आत्मा को पहचानो। ऑलराइट, जब आप आत्मा को पहचानोगे, इसकी सुनोगे, ये जिस तरह से नेविगेट करेगा आपको, जब आप इसकी सुनोगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। और अगर आप इसकी नहीं सुनोगे तो परमात्मा का पूरा हक है आपको सज़ा देने का। हम अगर घोड़े थे ना, जहाँ गदर मचा के घूम रहे थे, अब वो लगाम खींच लिया है किसी ने, ये उसी का ही आसार है। God sacrificed his son for the mankind. Jesus Christ was crucified on cross with the thorn, right? Nailed on his hand and leg in front of the mankind for the sin of mankind, right? सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत के साथ जो हुआ वही हुआ जो अभिमन्यु के साथ हुआ था, जो जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ था। या God always sacrificed his son, his child, to uplift the mankind, to show the bigger picture. And I will be talking about this in my upcoming videos as well, कि क्या होने जा रहा है। Get prepared guys। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। इसका अंत इंसानियत को कहाँ तक ले जाएगा, we cannot even imagine about that। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप सच्चे रास्ते पे हो, ईमानदारी के रास्ते पे हो, भलाई कर रहे हो, नेकी कर दरिया में डाल कर रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा विचार रख रहे हो, तो फिर आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। जो इंसान अच्छा कर रहा है इस वक्त, उसको अच्छा ही सिला मिलेगा। जो बुरा कर रहा है उसको बुरा ही सिला मिलेगा। आपको किस तरह का सिला चाहिए, ये तो आप लोगों को ही डिसाइड करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए भगवान ने आपको पूरा छूट दिया हुआ है, पूरा वक्त दिया है आपको भगवान ने सोचने के लिए, समझने के लिए। लॉकडाउन में घर के अंदर बैठ कर के आपने अपने लाइफ को किस तरह से सुंदर बनाया है, आपका पूरा टेस्ट हुआ है। अब 29 सितंबर को जब सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे, अभी तो बकरी चल रहे, रेट्रोग्रेड चल रहे, जब वो डायरेक्ट हो जाएंगे आपको रिवॉर्ड्स देना शुरू कर देंगे आपके कर्म मास के लिए। आर यू रेडी फॉर दैट? आप सोचो, पिछले 6 महीने में आपने कितने अच्छे काम किए हैं। अगर अच्छे काम किए हैं तो अच्छा होने वाला है, और अगर अच्छे काम नहीं किए हैं तो results are going to be worse than you can even imagine. So bring that positive energy towards your life. Think positive. अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, अच्छा रहिए अपने लिए, not to satisfy somebody else. भगवान के नज़रों में अगर आपको अप्रूवल मिला है ना इस दुनिया में आने का, if God has created you ना as a human being, ना कि चिकन मछली मटन की तरह आपको तो नहीं बनाया, आपको इंसान बनाया, राइट? ये अपने आप में ही बहुत बड़ा वरदान है। जिस दिन आप इसे समझ जाओगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको लगेगा भगवान आपके अंदर ही है, बस आपने हाथ बढ़ाया, आपके सारी इच्छाएं पूरी हो गई, आपके सारे मनोकामनाएं पूरी हो गई। इसीलिए हमेशा सबके साथ प्यार से रहिए, प्यार से बोलिए, प्यार से, राइट? बी ह्यूमन। इट टेक्स नथिंग टू बीइंग ह्यूमन। ओम नमः शिवाय।